भाई हर साल की तरह आपके शहर में मेरे शहर में सभी के शहर में दुर्गा पूजा वापस आ रहा है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। पंडाल बन रहे हैं एंड द होल थिंग लाइक इन गुजरात नवरात्रि के अपने होते हैं लाइक देखो हम गरबा एंड ऑल पूरी शहर की वाइब चेंज जाती है एंड आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड दिस ईयर। स्पीकिंग ऑफ लाइट, स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, स्पीकिंग ऑफ फन, आई थिंक मेरे को इस पॉइंट पर मेंशन कर देना चाहिए। Drake has dropped a new album which is insane. You have seen the feature. If you haven't, you should. J. Cole, 21 Savage, Bad Bunny और भी काफी फीचर्स हैं एंड ब्रो J. Cole का क्या वर्स है भाई। लाइक the whole transition of I think Travis Scott है, Drake है and himself and then replacing it to Muhammad Ali, which is nice. So हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड। आज भी एक सोलो पॉडकास्ट है एंड इन द प्रीवियस एपिसोड मैं थोड़ा कंसर्न था कि हाउ विल आई बी एबल टू टेक दिस फॉरवर्ड, क्योंकि आई एम ऑलवेज well, as far as this podcast is concerned, I'm always used to having someone hosting, like I am hosting them. तो ये थोड़ा weird था, but 5 minutes into the recording in the previous episode, if you haven't checked it out, you should. मैंने वो experiment start किया है. So I was a little concerned, but 5 मिनट के बाद I thought कि maybe this is something I can explore. So I had few ideas. मैंने कुछ लिख रखे हैं. It's not like a script, but कुछ points है जो I thought, क्योंकि मैं कभी-कभी भूल जाता हूँ, which is not a very good sign for a 20-year-old, but I have written some things that I want to talk about. I'm pretty excited to talk about these things, and I hope you like it. So without further ado, I'll start the shit. तो भाई हर साल की तरह आपके शहर में मेरे शहर में सभी के शहर में दुर्गा पूजा वापस आ रहा है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। लाइक if if you are in a city जहाँ पर हर साल the whole thing goes in a like a big level, पंडाल्स बन रहे हैं एंड द होल थिंग लाइक इन गुजरात नवरात्रि के अपने होते हैं लाइक देखो हम गरबा एंड ऑल सो पूरे शहर की वाइब चेंज हो जाती है एंड आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड दिस ईयर, क्योंकि और आई वाज आल्सो एक्साइटेड द लास्ट ईयर एज वेल, बट दिस एक्साइट्स मी एवरी ईयर, दैट इज द थिंग। एंड आई थिंक 2021 में when covid hit, not sorry 2022, sorry 2020 when the covid hit, everything got a little weird, कि अब ना पूजा ठीक से हो रही थी and कोई बाहर नहीं निकल सकता था एंड the whole situation was just not in the best shape possible, and 2021 में things got a little bit better but not whole, and 2022 में actually सब चीजें बेहतर हुई, लोग बाहर निकल पा रहे थे and they could actually enjoy the festival at its grandest level. And this year I hopefully everything gets repeat आपके शहर में मेरे शहर में, but I'm but with festivals, as I have grown up, things have changed the way I look out at festival, which is, I don't know, maybe if you just grow up with things happen to you, maybe it happens with you as well. And for me it's just, for me lately it has become food. For weird reasons I don't know, मुझे like बाहर जाने से ज्यादा, like बाहर जाना एक अच्छी एक्टिविटी है, बट आई वांट टू पर्टिकुलरली गो आउट एट फेस्टिवल्स फॉर फूड, जो कि पहले नहीं था। पहले इट वाज लाइक आई जस्ट वांट टू गो हैव फन विद फ्रेंड्स और मे बी फैमिली, एंड इट वाज मोर लाइक एन आउटिंग एक्सपीरियंस। नाउ ये कम है, which is a little like weird transition, like at, because at 15 I remember that was not the case. I just wanted to go out at अलग अलग जगह पे जाना, and now it's about food, and weirdly it's also about the people. Like पहले I think I was just too concerned about my experience, but now I'm more about the experience as a whole. And what I particularly like about दुर्गा पूजा इन जनरल इज दैट कि वो जो लोग आते हैं ना, आप अगर बड़े शहर में हो तो छोटे छोटे शहरों से बूढ़ी दादी आती हैं टू सेल स्टफ, कोई आइसक्रीम लगा रहा है, दैट उनकी बार्गेनिंग चल रही होती है। लाइक आपने अगर नोटिस किया होगा तो जब कोई फैमिली जा रही है, सपोज उनके पास एक छोटा बच्चा है एंड दी ओल्ड लेडी इज सेलिंग सम टॉयज,
and the conversation is very interesting between them, क्योंकि the mother is of that kid is saying कि नहीं ये टॉय नहीं चलेगा, ये टूट जाएगा, and it's you selling it too expensive and all, and the दादी is like नहीं नहीं दीदी आप लेते जाओ ना, ये चल जाएगा, आप मेरी बात तो मानो. And the whole conversation of that sales pitch is very interesting to me, which was I never noticed before. और या कुछ दुकानें होती हैं जो पंडाल के पास होती हैं, कुछ दुकानें होती हैं जो पंडाल से दूर होती हैं, और बहुत बार उस दूर वाली दुकानों पे ज्यादा भीड़ नहीं होती. तो whenever you see कि वहां से लोग पार हो रहे हैं, maybe they're selling something to eat, and the guy, you will see the guy, the efforts in that guy's voice, you can like कि इधर आ जाओ, आई बस मे बी बस आइसक्रीम है या मेरे बस छोले भटूरे हैं, एनीथिंग दे आर सेलिंग. व्हाट आई पर्टिकुलरली लाइक दैट जब वो सेल सेल या लाइक आई मीन जब आप एज अ फैमिली कुछ चीजें खरीदते हो उनसे, तो उनके there's something in their eyes that I've started to kind of see now which I couldn't before. कि आज मेरे पास हमने सब सपोज मैंने कुछ चीजें बिक्री की आज, and there's sense of happiness in your head, in that person's head कि आज घर पे एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, या मे बी दिवाली थोड़ी बेहतर जाएगी, which is very interesting, which was not the case before. तो ये छोटी छोटी चीजें has made the festival a little more better. I don't know. Like, what about you? Maybe it's still like going out, which is nothing bad about it. Like, tell me what you are into, like in the comments, of course. And sorry, but this is one of the things that I wanted to talk about. The whole experience of this festival is very grand, क्योंकि ये totally देखा जाए तो it's about 10 days, which is a very long stint, as same as Ganesh Puja that happens, Ganesh Chaturthi. बट अलग जगहों पे अलग होती है, कहीं पे 1.5 दिन के गणपति आते हैं, एंड दैट्स डिफरेंट. दुर्गा पूजा इज वेरी डिफरेंट. इट्स आई थिंक it's one of the very few heavily community driven festivals that happens in India, and a lot of people take part in it. Like, अगर आपको मजे ही नहीं आएंगे अगर लोग बाहर निकल कर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इन सेंस ऑफ मे बी घूमना, जस्ट हैविंग एंजॉयिंग, लाइक समथिंग लाइक दिवाली to a little extent, जो कि which starts with family in a lot of in every festival, like in every family जहाँ पे ये celebrate होता है, it start with your home. You start decorating. आप पहले साफ सफाइयाँ करते हो, फिर आप डेकोरेट करते हो, फिर बाकी चीजें पूजा है वगैरह वगैरह. बट इन पूजा, I was going to say पूजा, in Durga Puja, the intent is different. Like, the whole activity is socializing, कि आप बाहर निकल रहे हो, and same point, like, I don't want to repeat it again and again. You're going out with your friends or maybe with family, just nice. It's a very different than a lot of festivals, as far as like as much as I can think. So, which is interesting. So let me know, what do you think of Durga Puja in general, and also like, though it's a very good place to observe in Pandal, huh? Like, अलग अलग families आते हैं, अलग अलग वो behave करते हैं. Some of them are really funny. Like, if you've seen that, वो नए नए, like if you have observed, like जो नए नए couples आते हैं, the first time they are going out, उनको देखोगे आप, वो any time बस देख रहे होते हैं कि उन्हें कोई पहचान न ले, यहाँ से कोई रिलेटिव ना आ जाए, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली कंसर्न. वो एक आइसक्रीम शेयर कर रहे, तुम्हें दूर से पता चल जाता है कि वो लाइक दे हैव जस्ट स्टार्टेड टू डेट. एंड इट्स फनी, लाइक वो कुछ लोग देख रहे होंगे जो मे बी उन्होंने भी स्टार्ट किया है डेटना, नो ऑफेंस, बट इट्स फनी. द थिंग्स दैट यू डू आर जस्ट अ लिटिल फनी. पंडाल में आप छुप छुप कर देख रहे हो कि अच्छा, गाड़ी में आपने स्कार्फ बांधा हुआ है कि कोई पहचान न ले. So that little things are funny, like those things you observe जब वहां पे आप जाकर बस लोगों को ऑब्जर्व करते हो, लाइक whether the whether you like the मूर्ति और मे बी लाइट्स, वो चीजें तो हैं ही, बट जब आप उससे हटकर जब आप लोगों को देख रहे होते हो कि कौन क्या कर रहा है, एंड द होल एक्सपीरियंस बिकम्स अ लिटिल बेटर. सो दैट्स दैट दैट्स दैट. स्पीकिंग ऑफ लाइट, स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, स्पीकिंग ऑफ फन, आई थिंक मेरे को इस पॉइंट पर मेंशन कर देना चाहिए. ड्रेक हैज ड्रॉप्ड अ न्यू एल्बम व्हिच इज इनसेन. यू हैव सीन द फीचर, इफ यू हैवंट यू शुड. J Cole, 21 Savage, Bad Bunny, और भी काफी फीचर्स हैं. एंड ब्रो J Cole का क्या वर्स है भाई. लाइक, like the whole transition of
referencing Travis Scott. I think Travis Scott है, Drake है, and himself, and then referencing it to Muhammad Ali and the Spider-Man meme, which is nice. So I really enjoyed that song. Tell me, like, and all the सारे songs, I think it's around 23 or maybe 19 songs. I think Travis Scott में 19 songs. I think इसमें I am not sure. I forgot the number. But मुझे पूरा एल्बम तो नहीं पसंद आया. Like there are few songs that I didn't like. I liked 8 a.m. in Charlotte. I think that's the way it's pronounced. Maybe I'm pushing up the name, but so that's that. And first person shooter that I genuinely liked, J Gold feature मुझे सबसे पसंद आया, even more than Drake. तो मुझे ये दो songs बहुत अच्छे लगे. And it's nice, like in general, also मुझे पता चला कि Drake is taking a break from making music to focus on his health, which which makes sense. Like I can see it's his individual choice. But अगर वो नया म्यूजिक नहीं आएगा तो एज अ फैन आई विल बी a little disappointed. but but कोई नहीं, पुरानी म्यूजिक सुना जाएगा. But the whole scene about music and it's booming in India as well. हिप हॉप का सीन बढ़ रहा है भाई इंडिया में भी. अगर आपने चेकआउट नहीं किया, देयर सम ग्रेट आर्टिस्ट. सीधे मौत ने अभी एल्बम ड्रॉप किया. इट वाज अराउंड 30 सॉन्ग्स एंड दैट इज इनसेन. 30 सॉन्ग्स इन एल्बम, इट्स इनसेन. ठीक है. एंड खा कृष्णा है उसमें, बादशाह यार. उससे पहले ही बात हो चुकी है इसके बारे में, लाइक इन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. तो मुझे पता नहीं, बट आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय लव हाँ विद सीधे मौत. इफ यू एवर वाचिंग दिस, शाउट आउट. सो दिस कृष्णा, दिस बादशाह, दिस और भी सारे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने पहली बार डिस्कवर किया एक्चुअली. एंड दैट्स दैट. एंड किंग का नया एल्बम आ रहा है, एंड कृष्णा का नया एल्बम आया जिसमें सीधे बहुत में फीचर किया, जो उन्होंने एक दूसरे के एल्बम में फीचर किया, विच इज वेरी नाइस. एंड yeah, in general, like the whole music scene is booming. Hip hop, if you are a hip hop fan like I am, so the whole scene is really booming. It's nice. It's a good, it's a nice place to be live in basically. अच्छे टाइम पे आप हो, काफी सारे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, and also think the whole process of making music काफी democratized हो गया है, जो कि I have seen that was not a very good. At least that was not the case many years ago. And बहुत सारे artists independently आ रहे हैं, and something like MTV Hustle also made the whole thing easier. So that has been nice. And अब मुझे मुझे पता नहीं, like और भी सारे मैंने बहुत सारे, like what happened in the last 1 year, I guess, at least with me, is that मैंने वो सब वो ड्रॉप कर दिया है. लाइक द होल आइडिया ऑफ कि मैं बॉलीवुड सुनूंगा, एंड आई वाज लाइक लेट्स ड्रॉप एवरी थिंग दैट आई एम लिसनिंग एंड जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. तो मैंने अभी मेरी प्लेलिस्ट, नॉट फ्लेक्सिंग बट इट्स अ फ्लेक्स, मेरी प्लेलिस्ट हैव अ वेरी डाइवर्स artist which is I really like, because hip hop के artists है. I will be switching from Krishna Sidamore to Elvis Presley, not Elvis Yadav, not the me, Elvis Presley, and then back to Kishore Kumar, and then Shan, and then maybe Drake, or maybe 21 Savage, या Bad Bunny, या I don't know any other artist, maybe Pratik or her, anything. Like मेरे playlist इतना diverse हो गया, and I've also gotten into boiler rooms. आपने अगर वो चेकआउट नहीं किया, you should. Like अगर आपके पास टाइम है, if you're working and you need something to play in your ears, boiler room is a great place to start. बहुत सारी अच्छी म्यूजिक से अच्छा है. देयर सो मेनी आर्टिस्ट्स एंड डीजेस, इसके बारे में आप नहीं जानते होगे. लाइक वन ऑफ द वन दैट आई रियली लाइक इज डेविड ऑगस्ट, माय ऑल टाइम फेवरेट. बॉयलर रूम बर्लिन, आई थिंक इज 2009 या पता नहीं, इससे बात है, बट दैट्स माय फेवरेट. उसके अलावा कयान फ्रॉम, इट्स एन इंडियन डीजे. आई लाइक हर म्यूजिक. एंड दिस ऋत्विज, ऋत्विज ने भी अपना काफी म्यूजिक बनाया, बट ही इज आल्सो अ डीजे. So that's all that. Also the guy from Untriggered, I mean, I think Stewie also. They also do DJ sets. मैंने perform तो नहीं किया है, like I mean attend तो नहीं किया है, but in future I'm looking forward to listening to their music sets. I think they're doing great job. As like as a fellow podcaster, I really admire their work. Yeah, the whole vibe is great. चारों लड़के बैठ के चोरी कर रहे हैं, which is very nice. So I enjoy their content particularly. So I look forward to seeing, or they have become more consistent, which is very nice. उनके guests काफी diverse हो गए, which which is nice. Like
they're talking about other stuff, whether the uh, so the whole thing also like podcast as a genre is also growing in India. हर किसी के पास पॉडकास्ट है, which is हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, I mean, so even counting me, but it's nice to play. The thing is that competition ज्यादा है, तो I'll have to make a good product or make good content to cut out. So which is nice. It's nice. I keep saying nice. I don't know why. Like मुझे इस पे काम करने की जरूरत है. अकेले बात करने में ना यही प्रॉब्लम है. You suddenly go on a high rise and then you drop if you don't have a very specific thing to talk about. अगर conversation को free flowing रखना है, it's very hard to kind of sometimes hold someone attention अगर उसमें से कोई input नहीं है, because speaking at the front of camera there's no input and it is little. मुझे नहीं, ये भी मुझे ना ये भी लगता है कि कोई बंदा कमेंट सेक्शन में बोलेगा ब्रो यू नीड थेरेपी एंड आई वोंट हैव अ कमबैक, so that's a little, I don't know, I hope that day doesn't come out, but it probably will. Not that I don't think I need therapy, but it's a little void, it's a little weird to me क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी इस बारे में बात की थी कि the type of content that I used like to do is very conversational and it's very, sometimes it's a little weird to just have a conversation with to yourself. बुरा नहीं है, but it's a little hard to sometimes because you're just not thinking कि मुझे तुम्हारा attention भी hold करना है, and those are two very different kinds of things, so it's a little annoying. I think initially जितने भी episodes होंगे it's possible कि उसमें cuts ज्यादा हो. I think because I'm just trying a new thing, मुझे नहीं पता ये कैसा workout करेगा, तो if you see a lot of cuts, don't think कि मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ. It's just I think I have just cut out long pauses जो कि whole thing को काफी awkward बना दे. Not with the intent of कि conversation में pauses नहीं होते, but just because I'm having with myself, I'm just trying to speak with you, and वहां से कोई input नहीं है in sense of body language or anything else. So it's a little weird. Sometimes the pauses are long. I suddenly go on a pause up. I don't have a question to ask to someone. So don't think that I'm trying to hide someone. It's just I'm making the whole thing making the whole experience a little better for you. So yeah, I think हमने record किया around 15 minutes, which is not bad. Like for podcast, it should be a little more higher. जो कि होंगे. Like also, if you just watching this video for the first time, yeah, तुमने अगर इससे पहले मेरे एपिसोड्स देखे हैं, एज आई सेड बिफोर, मोर एपिसोड्स आर कमिंग इन, सोलो पॉडकास्ट एंड गेस्ट विल अपीयर. मैंने द होल थिंग इज लुकिंग गुड नाउ. मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट था, बट मैंने और लोगों से बात की है, दे हैव सेड यस, एंड आई विल हैव मोर डाइवर्स गेस्ट. Maybe it's lawyers, maybe it's doctors, maybe it's social media managers, कोई भी हो सकता है. लुक फॉर द सरप्राइज. आपके लिए भर भर के हम कंटेंट लाएंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हमने पढ़ाकू दिखने के लिए 4 किताबें ले ली हैं. हमने अपनी रेसिंग को लेकर के प्रति मोहब्बत जताते हुए पोस्टर भी लगाया है, हम पानी भी पी रहे हैं, माइक भी लगाया है, सेटअप पूरा टाइट है. आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप केवल हमें सपोर्ट करें. आई थिंक, आई समटाइम्स थिंक अगर नेता भी अगर ऐसे आगे चलकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब से वोट मांगने लगे तो हाउ वुड दैट बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग अबाउट अटेंशन. सबको अटेंशन चाहिए, सबको रिलेवेंट होना है, सबको रिलेटेबल होना है. इवन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने किसी से सुना था कि कंटेंट क्रिएटर्स आर सपोज टू बी रिलेटेबल एंड एक्टर्स आर सपोज टू बी मिस्टीरियस, जो कि क्योंकि जो कि उल्टा हो रहा है एक्चुअली. लाइक content creators are trying to be little mysterious and Bollywood actors are trying to be relevant and relatable, which is a very new thing to see. पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया. If you have, just let me know. Yeah, like अकेले बात करो तो प्यास ज्यादा लगती है.
fuck it, I don't have बस दो ही पॉइंट थे मैंने बात कर ली. If I'll have something more I'll speak, otherwise we'll end this video. So again, by the way, let me know like मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ, आप कुछ देखना चाहते हैं देख लो. मे बी माई वॉइस इज, मैंने अभी नोटिस किया कि मेरे पूरे एपिसोड में आई केप्ट दी माई वॉइस लिटिल लोअर एंड लिटिल लेस एनर्जेटिक फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. बट बट मैंने वो रियलाइज कर लिया है, एंड कीप दैट इन माइंड. सो आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट. टेल मी व्हाट यू लाइक, टेल मी व्हाट यू डोंट लाइक. कुछ और देखना चाहते हो, इफ यू वांट एनी गेस्ट, आई ट्राई टू ब्रिंग मोर पीपल इन, and I think hopefully people will come. Sure. Hopefully. Uh, but yeah, so I think I am done with the conversation. Uh, मैं और चीजें लाने की कोशिश करूंगा. I think I don't have much. So do the regime and bye.